Hello everyone. In the previous videos, we have already discussed about the solution of the homogeneous heat equation, non-homogeneous heat equation, and mean value formula for the heat equation. Today, we will talk about uniqueness theorem for the heat equation. What it says, suppose G is some continuous function over the boundary of the parabolic cylinder and F is continuous on a parabolic cylinder. Then you have to prove that there exists at most one solution u belongs to C1 square ut intersection C of ut bar. Okay, you know that ut is a parabolic cylinder, right? Of the problem is ut minus delta of u is equal to f in ut and u is equal to g on the boundary of this ut, that means on parabolic cylinder's boundary, right? Here u is subset of Rn which is open and bounded, and boundary of U is C1, that means C1, what does it mean? That means set of all those functions which is from boundary to R that are one time differentiable, right? And terminating time t is positive, that is given here. We will consider that t is positive here. So you have to prove that there exists at most one solution. So I suppose we will prove the result by the contradiction. I suppose there are the two solutions u and u bar of the given problem. That means of this one. If u and u bar are the solution of this problem, so you will say that u अगर satisfy कर रहा है तो यही आएगा ut minus delta of u equal to f in ut and u equal to g on boundary. और अगर u bar इसे satisfy कर रहा है तो आपका आएगा ut bar minus delta of u bar is equal to f in ut and u bar is equal to g on gamma t, right? Now we define a function w is, so write down define, right? We define a function w is u minus u bar, or you can say that, ये भी suppose कर सकते हो, और you can say that w is equal to u bar minus u, okay, whatever you want, sorry, u bar minus u, right? So here we are supposing w is defined as u minus u bar. So when we talk about in ut, that means in parabolic cylinder, we find out the value of the wt minus delta of w. So what will be wt? Wt will be partial derivative of this with respect to t and minus delta of w. W is this one, so delta of u minus u bar, right? So what will be the partial derivative of u minus u bar with respect to t? That will be partial derivative of u with respect to t minus partial derivative of u bar with respect to t minus of कर्ल स्क्वायर यू ओवर कर्ल एक्स आई स्क्वायर समेशन, ओके, अगर लेता हूँ मैं तो दैट विल बी डेरिवेटिव ऑफ दिस u एंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ यू दिस u बार, तो उसको दोबारा हम डेल्टा लिख देंगे, डेल्टा ऑफ u प्लस डेल्टा ऑफ u बार, राइट? बिकॉज यू नो दैट कि क्या डेल्टा u का मीनिंग क्या है, समेशन, दिस इज u एक्स आई स्क्वायर, जिसके रिस्पेक्ट में आप ले रहे हो u एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 to 1, राइट? सो इसी तरीके से हम इसे सपोज करके दोबारा आप अगर कन्वर्ट करोगे, पहले डेल्टा से मैं समेशन में कन्वर्ट करता हूँ तो इंडिविजुअल अलग अलग हो जाएगा, फिर समेशन से दोबारा मैं डेल्टा में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, राइट? बट इसे मैं क्या करता हूँ, अब कलेक्ट कर लेते यू टी और डेल्टा ऑफ यू, इसे तो एक साथ ले लीजिए, यू टी माइनस डेल्टा यू एंड माइनस, अगर मैं इनमें से कॉमन लेता हूँ माइनस, तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ यू टी बार एंड माइनस डेल्टा यू बार, राइट? लेकिन अभी तो आपने देखा है ऊपर कि जो यू टी माइनस डेल्टा यू है वो किसके इक्वल है, एफ के इक्वल है एन यू टी, और यू टी बार माइनस डेल्टा ऑफ यू बार वो भी एफ के इक्वल है एन यू टी। तो अगर मैं यू टी की बात ही कर रहा हूँ यहाँ पर, इन द यू टी वी आर टॉकिंग अबाउट, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू एफ एंड दिस वैल्यू इज ऑल्सो इक्वल टू एफ, सो दैट मीन्स दैट विल बी एफ माइनस एफ, दैट विल बी जीरो. What we got, wt minus delta of w, that is equal to 0 in ut, right? Now over the boundary we talk about. So when we consider the boundary, so w is what we are considering here, u bar, u minus u bar, but u is equal to what, u is equal to g on the boundary, okay, boundary of t, and also u bar is also equal to g on the boundary
of parabolic cylinder, right? So ये भी g के इक्वल है, ये भी g के इक्वल है, g माइनस जी ऑन दिस बाउंड्री, सो दैट मीन दैट विल बी इक्वल टू जीरो ऑन द बाउंड्री. ओके, अगर आप यहाँ ऑन गामा टी लिख रहे हो तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है. अगर यहाँ नहीं लिख रहे हो so you write down this g minus g on the boundary, so that will be 0 on the boundary, right? So what we got, w will be equal to 0 on the boundary, right? So we got two things, wt minus delta of w, that will be equal to 0 on ut, and w is equal to 0 on gamma t, right? Now we set a function et. E of t we define as integration over the u w square xt dx, okay, where t is lying between 0 and t. So if I take the derivative of this et with respect to t, so you will get d by dt of et, that will be equal to d by dt of this one. इसे आप d by dt लिखिए of et या फिर e dot dt लिखिए, that is the same. So when you take, so we transfer this to the inside, so what it will be, that will be derivative of w square xt, so it will be 2w into dw by dt. So dw by dt को मैंने w dot लिख दिया है, ओके. सो तो इज टेकन आउटसाइड, दैट इज w इंटू wt लिख दिया हमने उसे. नाउ dw by dt मीन्स कर्ल w by कर्ल t, you can say, okay. So what it will be when you find out is कर्ल w by कर्ल t, w इंटू कर्ल w by कर्ल t. लेकिन अभी आपने डिफाइन किया कि डब्ल्यू टी माइनस डेल्टा ऑफ डब्ल्यू क्या था आपका, 0 के इक्वल था, ओके, ऑन यू टी, राइट. सो ओवर हियर वी आर कंसीडरिंग डब्ल्यू टी माइनस डेल्टा ऑफ डब्ल्यू, दैट विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से डब्ल्यू टी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, डेल्टा ऑफ डब्ल्यू, राइट. सो वी प्लेस दिस वैल्यू ओवर हियर, ओके. सो इफ डब्ल्यू टी विल बी इक्वल टू delta of w, right? So we are here, wherever there is u, we will say, suppose that this is ut, right? So now what, you know the formula for that by the Green's formula. So एक green formula हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं in the previous videos also. What was that? If you are taking the integration of w dot delta w over this ut, so that will be equal to integration w dot curl w over curl nu surface integral over the boundary of this ut and minus integral of dw dot dw over this ut, right? So I will write the same thing. So we apply that formula over the boundary, surface integral and minus dw dot dw over this ut. This is ut actually, right? So what we got here, you know that over the boundary of ut, what does it mean? That means gamma t. Gamma t पर आपको w की वैल्यू क्या आई है, 0. So ये w आपका 0 आया gamma t पर. That means over the boundary of the ut. So this w is 0. If w is 0, so that part will be removed. Okay, if that part is removed, so you got e dot t will be equal to 2 times of minus of integral over ut dw square mod, right? You got minus of integral of ut dw square, right? It will be this one. But you know, this value of ut, that will be always positive. That means that will be always non-negative. But when it multiplies by this minus 2, that will be non-positive. So you say that this value is less than equal to 0. If this value is less than equal to 0, that means e dot t is less than equal to 0. If e dot t is less than equal to 0, that means derivative of the et is less than equal to 0 for all t lying between 0 and t. So you say that et is decreasing function, okay. तो अगर t आपका 0 से t के बीच में लाई कर रहा है और वहाँ पर d by dt of et आपका लेस देन इक्वल टू 0 है, सो यू से दैट इस इंटरवल में आपका et क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है. इफ et is decreasing, what does it mean? That means whenever you are considering some value, that means for the decreasing function, you know that if say some function of x is there and you are taking the 2 points, x1 is less than equal to x2, so or x is less than equal to x2 for if fx is decreasing function, so fx is greater than equal to f of x2, right? It will be this one.
So here 0 is less than equal to t. So if you find out the value of E0 is greater than equal to Et because of the decreasing function. Right? So we got E0 is greater than equal to Et, or you can write it down, और इसी को आप ये भी लिख सकते हैं Et is less than equal to E0, right? Whatever you want. So या तो इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, बट E0 हमारा क्या है, E0 की वैल्यू यू आर गेटिंग दैट E0 will be equal to 0. Why? Because in the right hand side you can see that if ut का मीनिंग क्या है, ut is u क्रॉस 0 to t, बट व्हेन यू आर टेकिंग एट t इक्वल टू 0, यहाँ पर E0 ले रहे हैं हम, तो t इक्वल टू 0 पर हमारा ut का मीनिंग क्या हुआ, u क्रॉस t इक्वल टू 0. तो u क्या है, सबसेट ऑफ आर एन विच इज ओपन एंड एट t इक्वल टू 0. तो आपको पता है कि पैराबोलिक बाउंड्री है जो, इन द पैराबोलिक बाउंड्री, दैट पैराबोलिक बाउंड्री कंसीडर ओनली दिस थिंग, कंसीडर ओनली दिस थिंग. तो ये हमारा जो ये पार्ट है ये एक्चुअल में इंक्लूड नहीं है, क्योंकि u आपका ओपन है, तो हमारे पास ये चीज़ इंक्लूड है सारी, ऊपर की जो बाउंड्री है t इक्वल टू टी पर, और ये हमारे पास जो बेस है, बेस पे इंक्लूड नहीं है. यानी कि अगर मैं बेस पर वैल्यू निकालता हूँ, बेस पर वैल्यू निकालता हूँ, जो आपका ये रेड पोर्शन किया हुआ है, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड हियर, और एक्चुअल में ये भी इंक्लूड नहीं है, राइट? तो इस बेस पर वैल्यू निकालता हूँ तो E0 विल बी इक्वल टू 0 ओवर दिस, बिकॉज दिस बेस इज नॉट इंक्लूडेड इन द ut. So you say that this E0 will be equal to 0. If E0 is equal to 0, so you can say Et will be less than equal to 0 for all t like between 0 and t. बट Et आपने क्या डिफाइन किया था, Et मैंने ये डिफाइन किया हुआ था कि दिस इज Et इज w square xt dx over ut, that w square xt which is always greater than equal to 0. Okay, because this is the square of the w, right? So if this is greater than equal to 0, और यहाँ से हमारा क्या है, Et is less than equal to 0 for all t like between 0 and t. So combining both the inequality, you can say that Et will be equal to 0. So I will say that Et will be equal to 0. If Et will be equal to 0, that means what was ut? That was the integration of over ut w square xt that dx, that will be equal to 0 for all t will lie between 0 and t, right? But you know one result, if integration of f dx over u equal to 0 and f is non-negative, then this implies that f is equivalent to 0. Okay, that will be identically equal to 0, right? Or you can say that will be equal to 0. If this is equal to 0, so you will say that ये आप चेक कर सकते हो, ये नॉन नेगेटिव है, and integration over this function over ut is equal to 0, so you will say that w square xt will be equal to 0 in ut. Okay, if w square xt is equal to 0, so you will say that w of xt will also be equal to 0 in ut. Okay, यहाँ पर भी ut है, सब जगह आप चेंज कर दीजिए, that will be ut. Okay, so if w of xt is equal to 0 in ut, so what was that w? W was, we defined that w is u minus u bar, so u minus u bar will be equal to 0 in ut. So what does it mean? That means u will be equal to u bar. What does it mean? That means हमने क्या सपोज किया था, there exist two solutions, u and u bar for the given problem, but they are not the different one, they are the same. Okay, so you say that whenever the solution of this type of the problem exists, the solution will be unique. Okay, तो जो हमने सपोज किया था that our contradiction was wrong, and we suppose that they are not different, they are the same. So therefore the solution of the given problem will be unique. Okay, so that will be unique. Here also you can say that c1 square ut intersection c of ut bar, ut, there is no bar, right? You make it right. So that was the uniqueness theorem for the heat equation. The next topic we will discuss in the next class. Thank you very much, students.